Yo guys, welcome back to new gameplay. मेरा वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगा लेकिन क्या कर सकते हैं ब्रो, टाइम ही नहीं मिलता वीडियो शूट करने का। आज हम ट्राई करने वाले गेटिंग ओवर इट वाला गेम। ये लो भाई साहब, ये लो अटक गया भाई साहब। There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas, and that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. ये भाई साहब ऊपर चल यार।
ठुक ठुक करके का देख। अरे यार अरे नहीं 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 यार। Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep क्या करे frustration, भाई, a real punch in the gut. हमको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता यार। ऊपर चला जाए। Oof, sorry about that. भाई साहब ये गेम बहुत ही घटिया है। चल 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 मेरे साथी, ऊपर चल जा बस एक बार, सबसे पहले चल 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 मेरे साथी। हाय! Oh, it happened again. Keep on trying, don't let it get to you. भाई माउस को तो क्या ही करना पड़ रहा है मुझको। मेरा पूरा माउस ही शायद कंप्यूटर का खराब हो जाएगा भाई ऐसे करते करते। इतना जगह ले रहा है भाई ये माउस में खेलते टाइम भाई साहब। बहुत खराब। ये देखो कुछ देर ट्राई करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ये वीडियो। भाई ये पिछले 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ, ये गंजा ऊपर ही नहीं जाता। और आप लोगों को 1 घंटे की तो वीडियो शूट करके नहीं दिखा सकता ना, यही तो मेरी मजबूरी है दोस्तों। 3 दिन बाद ही सही, लेकिन मेरा गेम आ तो रहा है ना, मैं एंजॉय करो दोस्तों। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, व्यूज़ भी नहीं देते, 1-2 सेकंड देख के चले जाते हो, ऐसा मत किया करो यार। बस सब्सक्राइब कर दो, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना वो दबा देना ज़रा। ओ भाई साहब गंजा कितना ज़्यादा जंप लगाता है भाई साहब, एक एक टाइम तो भाई साहब क्या ही बोले भाई, क्या ही बोले। ये देखो गंजे की ताकत देखी तुमने, ये देखो भाई साहब एक बार में ऊपर पहुंचा दिया हम लोगों को। ओ भाई साहब ऊपर चल जा, बस ऊपर चल जा। इसके ऊपर आके ये देखो भाई साहब, कुछ नहीं, हिलना नहीं हिलना नहीं हिलना नहीं हिलना नहीं हिलना नहीं, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऊपर आए थे पिछली बार हम, लेकिन फिर से भाई साहब नहीं हो रहा है दोस्तों। आपके लिए मैंने बहुत ट्राई किया दोस्तों, लेकिन नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं हम। ये भाई साहब नीचे मत गिरना दोस्त। अबे गंजे कुछ तो रहम कर, अबे साले ऊपर चलना यार। This thing that we call failure is not the falling down, देखो इस नंबर but the staying down. कपड़े वपड़े Mary कुछ नहीं Pickford. पहनता है। ये भाई साहब
कितना ऊपर पहुंचा था भाई। Get nasty, boy. चल भाई चल, Going गंजे down the चल। road feeling bad. Children, I'm children. going down the road feeling bad. Going down the road feeling bad, and I ain't going to be treated this way. Oh, देखो भाई कितना ऊंचा ऊंचा जंप लगाता है, बस वहां पे ही नहीं पहुंच रहा है। एक और एक रहम कर दे भाई। down in the jail on my knees. I'm down in the jail on my knees. मैं सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता है और तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, यही खराब लगता है भाई, और कुछ भी नहीं दोस्तों। They feed me on cornbread and cheese, and I ain't gonna be treated this way. और मैं आपको और एक बात बता दूं, मैं काइंड मास्टर यूज नहीं करता क्योंकि मैं सेल्फ वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। और दूसरी बात, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता बीच में। आप सब देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पूरा लाइव है, कोई भी सीन कट देखने को नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, एक भी सीन कट नहीं होगा। ये देखो तुम्हारा भाई फिर से उसी जगह पे पहुंच गया ना। ये भाई साहब $10 shoe fits my feet, and I ain't going to be treated this way. Going where the weather suits my clothes. आपको भी इजी रहेगा। देखो आपको अगर प्रैक्टिस करना ना ये वाला गेम आपके हाथों के स्किल्स के लिए, तो ये बढ़िया गेम है, लेकिन आपको हाथ का मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है माउस पे, वरना क्या होता है कि आप कभी एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। ये देखो गंजे को, Turn down, boy, turn down. Hey! ये देखो भाई गंजे को जरा देखो कैसी हालत में है, बेचारा भूखा नंगा हथौड़े से चला रहा है। कुछ तो रहम कर बे, कुछ तो रहम कर भाई। गाइस मुझसे और नहीं हो रहा गाइस, मुझसे और नहीं हो रहा दोस्तों। लास्ट ट्राई करूंगा। गंजे तू नीचे चल, गंजे तू नीचे चल, तू नीचे चल, मैं तुझको नीचे ही लेके जाऊंगा, और नीचे जाऊंगा तुझको। चल गंजे चल, मेरे साथ चल गंजे, गंजे मेरे साथ चल, बहुत कर रहा है तू। मैं उस साइड से तुझको नीचे लेके जाऊंगा, तू बस देख, देखते रहिए। अब मेरा हो गया मत्था खराब भाई। गंजे तुझको उस साइड ही जाना है ना, तुझको उसी साइड भेज कर रहूंगा। चल भाई।
कंजित, तुझको मैं नीचे ही लेके जाऊंगा, उसी साइड से लेके जाऊंगा। तू बस रुक, तू और 1-2 मिनट रुक जा बस। तो गाइस रुको भाई, तो क्या हो रहा है मेरे साथ भाई? The soul would have no rainbow had the तू नीचे eyes no जाएगा ना, चल tears. नीचे चल John भाई, Vance नीचे चल Cheney. तू उस साइड चल बस, अब उस साइड चल। अब उस साइड नहीं जा रहा है क्या? तो ये देखो भाई, चलो भाई आज के गेम में बस इतना ही दोस्तों, इतना ही। देखते हैं भाई साहब आपका टेस्ट जा रहा गंजा। चलो भाई फिर से नीचे चलते हैं हम। चलो भाई साहब बाय, सी यू नेक्स्ट दोस्तों।